A very good morning to one and all. Unnati madam. Kokne sir, are we ready? Shall we start? So screen or hello, Kokne sir. Yes, now it is okay, sir. The students are still joining, but as per the time, we will be starting with the lecture. With the permission of Principal Madam and Advocate Vajpayee sir, I'll be starting with the lecture today. I welcome one and all to today's third lecture of the lecture series. And this for this lecture series, we have Assistant Professor Ms. Unnati Jadhav Madam for delivering today's lecture. And the topic of today's lecture is relating to the digital age, copyright law and the copyright protection in the digital age. It's a very current topic. So we are very excited to have a discussion and listen to your lecture, ma'am. So I would like to request you kindly to start with the lecture. Ma'am, can you please unmute yourself? Thank you so much, ma'am. So directly, I would like to start my presentation. Yes, ma'am. Yes. Can I? Yes, of course.
Is this slide is visible, ma'am? Yes, ma'am, it's visible. It's visible. Perfectly fine. Yes. Okay. So, as today's my topic, that is DMCA, a comprehensive overview of this copyright law in the digital age. So, let's talk about it primarily from the meaning of DMCA, what DMCA actually stands for. So, the meaning of DMCA is, first of all, DMCA, that the letter D that stands for digital. Digital means what here? Digital means electronic technology. So that electronic technology which generates data, which stores the data, and which processes that data, which is called as digital. Right? Then next one is M, that M which is stands for millennium. Generally, in general terms, this millennium, which means a period of 1,000 years, or as we can call it a century. So here in this context of a DMCA, which means the aim of the aim to protect this intellectual property for the next millennium, for the next century. That is the aim of this makers of the DMCA. Then next one is Copyright Act. Copyright Act, which is a part, which is a form of IPR. So intellectual property rights are there, and copyright, it is a part of that intellectual property. What exactly it is? So copyright, it is an exclusive right of creator, of author to produce the work, to reproduce the work, to publish the work, as well as to perform his original work. Here, the term original work is very essential when we talk about the copyright. There are some subject matters regarding it, which talks about, first of all, literary works are there. In case of literary work, it includes books, poems, articles, etc. So, in case of literary work, which includes these, then afterwards, next one is musical work. It also includes artistic works, which includes painting as well as photographs, which includes. Next one is cinematographic film. In case of cinematographic film also, this Copyright Act which protects the all rights of copyright holder. Also, next subject matter is of sound recording, and as well as last one is computer software. So any person who makes this original work, and that person's rights will be protected under the Copyright Act. And that person only who is the original content creator is having the right. Which right? That person is having exclusive right, means only that person can produce the work, only that person can reproduce the work or to publish that work. So this copyright that grants exclusive right to this creator to control the copying, to control the infringement and other form of exploitation of this copyright material. Means here, if I am the person who is making original work under these subject matters, then if any other person using my original work without my permission, without my authorization, without a license which is permitted by me, then it is called as infringement. So it protects that expression of idea and not the idea itself. Copyright which protects the expression of idea. Suppose I have an idea in my mind regarding making of a film or regarding writing of an article on a particular topic. Then my that idea that will not get protected. Why? Because it is in intangible form. When my work will become a tangible form, means it must be written somewhere, it must be published somewhere that we can see. So if that idea that becomes a tangible one, then and then only this copyright original work that will get protected. So let's talk about how
this DMCA comes from, why there is a need, why there is a necessity to form such kind of resolution, to pass such kind of law. So first of all, the source of this is came from the WIPO. WIPO, that is World Intellectual Property Organization, which was established in the year of 1967 to promote and to protect the intellectual property across the world. That is the main reason behind passing of this treaty. So this organization mainly promotes and protects this intellectual property, which is not a limit to a particular state, but which includes various nations that intellectual property, including copyright, which is protected across the world. So by cooperating with these countries as well as some international organizations, there are near about currently 200 countries are there who signed this WIPO agreement, and India is also member country of it. So later on, this WIPO that felt that there is a need for updated international copyright protection in response to technology. First of all, when दिस डीएमसीए एक्ट जो है, ये डीएमसीए एक्ट फ्रेम हुआ, ठीक है, ये क्यों फ्रेम हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, विपो ने अंडर द विपो ने क्या किया, ग्लोबली ये कॉपीराइट, एक कोई भी स्टेट या कंट्री वहां तक ये लिमिटेड ना रखते हुए विपो ने क्या किया, ये चलो कि हम क्या करते हैं, अब पूरे वर्ल्ड में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं. विद दैट इंटेंशन विपो ने क्या किया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सम राइट्स ऑफ कॉपीराइट होल्डर प्रोटेक्ट किए, ठीक है. और ये करने के बाद, प्रोटेक्ट करने के बाद बहुत सारे मेंबर कंट्रीज ने उन पे साइन भी किया. मींस विपो के जो भी प्रोविजंस रहेंगे दैट विल बी एप्लीकेबल टू मेंबर कंट्रीज. लेटर ऑन दिस felt that there is a need for updation in this international copyright protection. In response to these technological advancements are there, especially this digital media and especially this internet. So with the rise of this internet and with the rise of digital technology, existing copyright laws, they are primarily designed and for physical media that were becoming outdated due to also rapid growth of digital piracy, which is unauthorized copying and sharing of the music, of the film, or of the books and any other content that became easier online. If अगर सपोज टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो भी रहा है तो उसके डिसएडवांटेज भी ज्यादा हो रहे हैं. एनीबडी कैन डाउनलोड द म्यूजिक, कैन डाउनलोड द फिल्म्स और द बुक्स और ऑफ एनी अदर कंटेंट फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट. तो अनऑथोराइज्ड क्या हो रही है, यहाँ पे पायरेसी हो रही है. पायरेसी मीन्स व्हाट, दैट विदाउट एनी authorization, if any person using that original work of copyright holder, that amounts to piracy. So इससे क्या हो रहा है, जो copyright holder है, their rights that is getting exploited. So that is the reason why WIPO consider that to eradicate this piracy, there was a strong need to combat these infringements through the international cooperation and through this legal framework. That's why WIPO adopted two treaties in the year of 1996. WIPO ने क्या किया, ठीक है, अब क्या करना है, अपग्रेडेशन करना है. Why? Because सोसाइटी चेंज हो रही है, डिजिटल यूज ज्यादा हो रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ ट्रीटीज भी रिक्वायर्ड है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कॉपीराइट होल्डर. तो इसके लिए विपो ने क्या किया, दैट विपो कॉपीराइट ट्रीटी that was signed, and another one is there is WIPO performance and phonograms treaties. These two treaties were established by WIPO. So first of all, the WIPO copyright treaty, and the second one is WIPO performance and phonograms treaty, that were established just to ensure that this copyright
copyright protection is extended to digital realm only by addressing this issue. Like suppose there is unauthorized digital reproduction is there, unauthorized distribution of work is there. So which covers, these two treaty covers this particular areas. That specifically WIPO copyright treaty, that first one, that specifically enhance the right of author, which includes literary work, which includes artistic work. So first treaty, that is of WIPO copyright treaty, which mainly focuses on literary and artistic work only in digital format. Literary work in digital format, artistic work that is also in a digital format. So like if there is a distribution of work over the internet, so and regarding protection against that unauthorized copying, so to tackle these problems, to issues this infringement, this WIPO copyright treaty, which gives protection against this such kind of unauthorized copying of original content. Then second treaty, that is WIPO performance and phonograms treaty. This treaty designed to strengthen rights of performers and as well as of the producers of sound recording, with ensuring these they have the right over this digital distribution and online performances. So here in this case, WPPT, what it mainly focuses on performers' right and which only focuses on producers of sound recording. So they are having the rights over the digital distribution, that where to distribute their original content. If the copyright holder, he wants to distribute his original content on suppose on any OTT platform, ठीक है, अगर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को क्या लग रहा है कि मैं मेरा कंटेंट क्या करूं, इस पे यूट्यूब पे अगर मुझे मेरा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो मैं वहां कर सकता हूँ. ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर अगर क्या कर रहा है कि उसको लग रहा है कि मैं मेरा कंटेंट नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजोन पे अपडेट करना है, मुझे वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीकास्ट करना है, तो वो वहां पे करेगा. मेनी ऑफ द टाइम्स these original means copyright holders, वो क्या करते हैं कि उनको जहां पे भी उनका डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो वहां पे कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे टाइम्स प्रोमोज में वगैरह देखा होगा आपने कि जो कास्ट होती है पर्टिकुलर मूवी की, वो मेंशन करती है कि वो मूवी पर्टिकुलरली थिएटर्स में रिलीज हो रही है या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, ये सब मेंशन किया जाता है, राइट. So only these copyright holders, they are having that right of digital distribution and as well as of online performances. So कहाँ पे online perform करना है कि YouTube पे मुझे live जाके perform करना है, ये totally discretionary power होगी किसके पास, only towards the copyright holder के पास, which is called as exclusive right of the copyright holder to digital distribution as well as of online performance. So these two rights are protected under this WIPO performance and phonogram treaty. So these two treaties that helps the creator, which helps the performers and also to the producers to safeguard their rights internationally, which is becoming important due to global nature of the internet, right? So if one person, suppose for example A.R. Rahman is there, for example Sunidhi Chauhan is there, Shreya Ghoshal is there, right? If these singers, if they wants to protect their original work, they can, but it is not limited to India only. Suppose उनको उनका जो भी ओरिजिनल वर्क है वो करना है, तो वो ना कि ओनली इंडिया में बल्कि थ्रू आउट द ऑल टेरिटरीज, जहाँ ग्लोबल नेचर अदर कंट्रीज में भी देयर राइट दे कैन बी प्रोटेक्टेड. वैसे ही अगर सपोज कोई फॉरेन सिंगर है, फॉर एग्जांपल जस्टिन बाइबर इज देयर, अगर उनका भी कोई म्यूजिक है जिसपे उनका कॉपीराइट है, तो वो भी क्या हो सकता है, ग्लोबली प्रोटेक्ट किया जा सकता है
क्यों प्रोटेक्ट किया जा सकता है ग्लोबली, कहाँ पे है ये अथॉरिटी? दैट इज वीपो, that ensures that your content will be protected globally if you are having the original work. Okay, तो ये globally protect किया जा सकता है just by signing these treaties of WIPO. These both the treaties, they require some member nation, they require these signatories to provide their respective jurisdiction. So those are the member country, who are the member countries, who are the signatories of the WIPO. In that nations, the rights of copyright holder that will get protected. So as a result of which, just because of these two treaties which are signed by about 200 countries, as a result of these treaties, the DMCA, which is passed by the US, the Digital Millennium Copyright Act, जो भी ये ट्रीटी पास की गई, वो ट्रीटी साइन करने के बाद यूएस वाज द फर्स्ट कंट्री who signed, who passed the law that is of DMCA. It is the world's first law which recognizes intellectual property on the internet, which is signed into law by the Bill Clinton, who was at that time who was the president. So that is why the DMCA is being DMCA, which protects the digital content of a copyright holder. So US, again, I would like to highlight that US was the first country who make a law over the protection of digital content. What was the reason behind it? That विपो ने तो ट्रीटी साइन करवाए, ठीक है, उसके बाद इतने जल्दी in the year of 1996 these treaties came into force, right? And in the year of 1998 immediately United Nations they passed a law regarding copyright that is called as DMCA. So what is the need कि इतनी जल्दी पास क्यों किया लॉ? कुछ तो रीजन रहा होगा, डेफिनेटली वो भी कुछ तो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे, इसीलिए तो उन्होंने ये इतनी जल्दी ये लॉ पास किया, राइट? सो रीजन बिहाइंड पासिंग ऑफ दिस लॉ दैट यूएस फेल्ट दैट देयर इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कमर्शियल वैल्यू ऑफ कंटेंट क्रिएटर. डेफिनेटली देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कमर्शियल वैल्यू. अगर कोई ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर इतना हार्ड वर्क कर रहा है, खुद का ओरिजिनल वर्क अगर बना रहा है, एंड सपोज वो वर्क जिसके लिए वो अभी वो प्रोटेक्टेड है, उसका राइट है उस पे, लेकिन अगर कोई उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, अगर कोई उसको अदर प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहा है एंड वहां से अदर पैसे कमा रहा है, तो इधर क्या होता है दैट हियर दैट ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स राइट of commercial value that is getting exploited. Why? Just because of that content which is uploaded by him that used to copy paste by another person without his authorization, without his permission. So just to stop such kind of exploitation, this DMCA was passed. Also to maintain the balance between whom? Between the rights of copyright owners and also between the needs of consumers by examining each copyright violation. Definitely there are rights of copyright owners, ये भी प्रोटेक्ट करने हैं. नीड है कुछ कंज्यूमर्स की नीड है रिगार्डिंग म्यूजिक, नीड है रिगार्डिंग पर्टिकुलर ई बुक्स और रिगार्डिंग कुछ आर्टिकल्स उनको रीड करने हैं, तो कंज्यूमर्स की भी नीड है. So ये to maintain that balance between these rights of copyright owners and in between the need of consumer, by examining these copyright violation, there is a need to protect it, right? So to balance it, this copyright DMCA was passed. Another one is that is the intention of lawmakers through this DMCA that has been provided copyright holders some legal instruments. Means under this DMCA, some legal instruments are also being provided specifically where there is a infringement, online infringement of copyright content
in that case, some legal instruments are being provided under this DMCA. Also, after newer technology, which enables consumer to freely download music. Generally, we also does that, right? We download free music, we download free films from particular apps or other kind of art, which is without attribution or without payment to such a kind of digital original artist. So that is the reason why US passed this DMCA. होता है ना मोस्टली कि हम क्या करते हैं एज अ कंज्यूमर, अगर कहाँ से हमें फ्री कंटेंट अगर मिल रहा है कि फ्री हमें अगर म्यूजिक मिल रहा है दैट वी कैन डाउनलोड फ्री म्यूजिक, डेफिनेटली हम डाउनलोड कर सकते हैं. तो अगर पॉसिबल है तो करेंगे ही डेफिनेटली. अगर कहाँ से हमें फिल्म मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर सपोज a particular film which is right now picturizing in the theaters, but if we are having that same film in a HD quality on our mobile, कि कोई तो एक XYZ ऐप है कि वहां पे हमें HD क्वालिटी की मूवीज अगर हमें फ्रीली मिल रहा है तो डेफिनेटली many of the consumer they will get that free films, right? So बहुत सारे ऐसे कुछ जो वर्क्स है अगर फ्रीली डाउनलोड हो रहा है तो यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है वहां पे उनका एप्रिसिएशन हो रहा है नहीं, उनको कुछ क्रेडिट मिल रहा है नहीं, कुछ फीडबैक मिल रहा है नहीं. मीन्स दैट हार्ड वर्क जो भी उन्होंने किया है ये सब क्या हो रहा है, उसका कुछ भी उनको एक वैल्यू जो होती है वो नहीं मिल रही है, कमर्शियल वैल्यू नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है. तो इससे क्या हो सकता है दैट कंटेंट क्रिएटर दे मे रिड्यूस देयर वर्क, और ये भी हो सकता है कि वर्क कुछ कंटेंट क्रिएट ही ना करे क्योंकि एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, कुछ पैसे नहीं मिल रहे, जस्ट बिकॉज ये इजीली इन्फ्रिंज हो रहा है. तो टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ दिस copyright holder of this content creator, this DMCA mainly passed by the US. What is the applicability of it? कहाँ पे ये applicable है? So it only applies to the websites that are published in the United Nations, in the United States. Again, I would like to highlight that it only applies to the websites that are published in the United States. So that even if suppose copyright owner which is not situated in the United States, then also they will send a DMCA infringement warning if that server of website it is based in the United States. For example, there are some examples are there, like Google is there, Microsoft is there, Instagram, Twitter, Facebook, as well as Flipkart. These are the American companies. So even though applicability of this act, which is limited to the websites that are published in the United States, so these are some websites, these are some companies who are the American companies. So that's why अगर हम कोई भी कंटेंट इस गूगल पे अगर पब्लिश करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट पे पब्लिश करते हैं या फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम अगर पब्लिश करते हैं तो डेफिनेटली यूएस हैज दैट राइट टू टेक एन एक्शन इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट. और ये एक्शन कैसे लिया जाता है? दैट इज थ्रू द DMCA प्रोविजंस. अगर डिजिटल कॉपीराइट है तो डिजिटल कॉपीराइट के कुछ सब्जेक्ट मैटर्स भी रहेंगे. यस, कि डिजिटल कॉपीराइट के सब्जेक्ट मैटर्स है जिसमें कि फर्स्ट वन है डिजिटल लिटरेचर. इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है डिजिटल लिटरेचर में? विच इंक्लूड्स ई बुक्स, विच इंक्लूड्स आर्टिकल्स और विच इंक्लूड्स ब्लॉग्स, राइट? आप कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली लाइब्रेरी से जाके बुक्स वगैरह लेके उसमें से नोट्स प्रिपेयर करते हैं, राइट? और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि मोबाइल में सर्च करते हैं, कहाँ से तो फाइंड आउट करते हैं, ई रिसोर्सेस आर देयर, हम मोबाइल से ही कंटेंट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, राइट? तो ई बुक्स दैट आर आल्सो अवेलेबल ऑन अवर मोबाइल. तो अपने कॉलेज की जो लाइब्रेरी है वहां पे भी ई बुक्स अवेलेबल है, राइट? तो ये जो ई बुक्स होते हैं और आर्टिकल्स आर देयर और ब्लॉग्स आर देयर,
these are digital literature. Okay, that is one of the subject matter of the copyright, digital copyright. Next one is music and audio files. That is also another subject matter of this digital copyright. Videos and films are there, which also covers software and also as well as mobile apps. Various mobile apps are there, right? For gaming, there are various mobile apps, or for dating apps are also there. Various mobile apps are there, right? So ये सभी मोबाइल apps भी ये कॉपीराइट, डिजिटल कॉपीराइट के अंदर आते हैं. Another one is digital art and graphics. For a particular website, a person use this digital art and graphics, then that also get protected under the digital copyright. Another one is websites and online content. If I make a website, then only I have the right over it. अगर किसी ने as it is कॉपी किया है मेरा वेबसाइट, तो मैं इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकती हूँ. Yes, definitely. Then online content, if any person is the original creator of the online content, then he is considered as a author of that online content. And if any other person use that content as it is, then the original content creator here, he can take an action against it. Last one is social media content. If any person now, the use of social media that is increasing day by day, right? So social media content that also comes under the digital copyright. If any person make a tweet, or if any person make a video on the YouTube, so in this case, long YouTube videos, they are having the copyright. If any other person without the authorization of original content creator use that video, then definitely the original content creator here, he is having the right to take an action against him, the person who is using without an authorization. अगर यहाँ पे सपोज वहां पे ऑप्शंस भी आते हैं वो वीडियोस के नीचे, दैट इज कि कुछ वीडियोस में डाउनलोडिंग का ऑप्शन होता है, कुछ वीडियोस में डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं होता है, इट मींस ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर क्या कर सकते हैं, उनकी मींस दैट इज टोटली ऑन हिज विश कि उनको वो कंटेंट पब्लिकली ओपन रखना है या फिर रिस्ट्रिक्टेड रखना है कि लोग बस उनका कंटेंट देख सकते हैं, डाउनलोड नहीं कर सकते, किधर भी शेयर नहीं कर सकते. सो दैट इज टोटली हिज चॉइस. सो सोशल मीडिया कंटेंट्स दैट आर आल्सो गेटिंग प्रोटेक्टेड. एंड जो रील शॉर्ट्स रहते हैं यूट्यूब में, वो जो शॉर्ट्स रहते हैं, रील्स हम उसको बोल सकते हैं, तो यूट्यूब के शॉर्ट्स पे कॉपीराइट नहीं हो सकता, तो वो यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट उसका नहीं कवर होता है. तो डिजिटल कॉपीराइट में अभी तक तो जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं वो प्रोटेक्टेड है अंडर द डिजिटल कॉपीराइट. नाउ दीज आर सम सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ डिजिटल कॉपीराइट एज आई टोल्ड यू. Let's move further regarding some key components of DMCA, some provisions of DMCA. First provision of DMCA is anti-circumvention provisions. What does it mean? So these anti-circumvention, which refers to the laws that are prevent individuals, that also prevent some organizations from bypassing these technological barriers, which controls the access of copyrighted works. If the work is being copyrighted, and if there is an agency who is protecting, who is controlling that copyrighted work, but if there is an individual or any organization, if they are bypassing that barriers and using and infringing that work, then definitely to protect such kind of copyright work, these anti-circumvention provisions are being made. For example, that prohibits some circumventive technology measures to assess this copyrighted work. There is DRM is there, that is digital rights management is there. This digital right management, DRM, which is formed to protect the rights, copyrighted rights, which is digital one.
So it is a technology which controls the access of that copyright content, such as software, such as music and the films. This DRM, which allows this copyright holder to manage that, how the users can access and they interact with their content. ये जो एंटी सर्कमवेंशन प्रोविजन है, इसके अंडर DRM एक कॉन्सेप्ट है कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट इज देयर। ये DRM क्या करता है? DRM अलाउ करता है कॉपीराइट होल्डर्स को टू मैनेज देयर वर्क। कैसे मैनेज करेंगे कि वो जो कंटेंट है कौन देख सकता है, कौन इंटरैक्ट कर सकता है उस कंटेंट से। ठीक है, कभी कभी हम जो भी कुछ सपोज कुछ ऑनलाइन कंटेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स आर देयर। अगर हमें वो आर्टिकल, कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं कि जहां से हम वो आर्टिकल का जो कंटेंट है एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यूज करते हैं। ओके, इट मीन्स कि ये जो DRM है क्या मैनेज करता है कि कौन इंटरैक्ट कर सकता है विद दैट कंटेंट, ये डिसाइड करता है। तो कुछ क्या मेरी वेबसाइट पे मैंने अलाउ किया है तो कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली मेरा जो कंटेंट है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ कुछ वेबसाइट ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, राइट। कुछ ऐसे वेबसाइट भी होते हैं कि जहाँ पे वहां पे रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, राइट। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे पेमेंट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो ये जो DRM है, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट, ये डिसाइड करता है दैट अलाउज द कॉपीराइट होल्डर टू मैनेज दैट हाउ दैट यूजर्स कैन असेस और इंटरैक्ट विद देयर कंटेंट, कि वो प्राइवेट रखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखना है, कि वहां पे पेमेंट रिक्वायर्ड है, वहां पे रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है और वहां पे ईमेल वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। These are managed by this digital rights management. It also protects that digital media from unauthorized use. It also protects some sensitive information by limiting the access to authorized users. Like suppose for example, all of us mostly we are using social media, right? अगर कहाँ पे किसी ने कुछ पोस्ट किया है, सपोज दैट कंटेंट इज सेंसिटिव कंटेंट, कि किसी ने अगर कोई मार रहा है किसी को, ऐसा कुछ कंटेंट, ऐसा कुछ वीडियो अगर पोस्ट किया है, तो वहां पे जो फर्स्टली प्राइमा फेसी हमें कंटेंट नहीं दिखता, वहां पे ब्लर होती है इमेज एंड उस पे सेंसिटिव कंटेंट ये वहां पे लिखा हुआ होता है। जब हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं, प्रायर टू दैट गूगल के पास हमारा पूरा डेटा है, दैट इज अवर एज, अवर एड्रेस, अवर जेंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वहां पे वो जो एज क्राइटेरिया है, अगर हम अबाउ मैच्योरिटी है, एज ऑफ मैच्योरिटी है, तो डेफिनेटली वो सेंसिटिव कंटेंट हम देख सकते हैं। अगर कोई, आजकल बच्चे भी यूज कर रहे हैं मोबाइल, ठीक है, कुछ कुछ बच्चों के खुद के मोबाइल्स भी है और उनपे उनका गूगल का अकाउंट भी है, तो ये जो बच्चे हैं बिलो द एज ऑफ मेजॉरिटी, ये ऐसे उनको ये कंटेंट्स एक्सेस नहीं हो सकते, ये प्रोहिबिटेड किया गया है। तो ये सब कौन मैनेज करता है? दिस डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट दैट मैनेजेस इट। इफ देयर इज एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, तो ये क्या करते हैं, DRM, दे लिमिट दैट access of that authorized to authorized users। एज वेल एज आपने ये भी देखा होगा कि कहाँ पे किसी ने पोस्ट कर दिया और वहां पे कुछ कंट्रोवर्शियल कुछ मैटर्स वहां पे लिखा होगा, सपोज मर्डर और रेप और ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वहां पे डायरेक्ट वो वर्ड्स यूज नहीं किए जा सकते। वहां पे कुछ लोग स्टार यूज करते हैं, एज इट इज स्पेलिंग यूज नहीं कर सकते, राइट। इवन दो वी एक्नॉलेज व्हाट इट इज हैव बीन रिटन, बट स्टिल वहां पे स्टार वगैरह दिया जाता है। तो ये कौन देता है, मीन्स क्यों प्रोहिबिटेड है? दैट digital rights management that allows or that limit of access
who these authorized users. Also, it bans manufacturing, it bans importing, distribution of devices or software that bypass this copyright protection. So that is the first provision which is passed by the DMCA. Another provision which is of safe harbor provision. It means it protects online service providers as well as it protects some internet service providers. ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन रहते हैं, कौन आता है इसमें? सो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स विच इंक्लूड्स सम इंटरनेट असेस, जो कि ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमें. कौन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करता है? ईमेल. ईमेल भी क्या हम कंसिडर कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली ईमेल इज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, एज वेल एज ऑनलाइन बैंकिंग, न्यूज, एंटरटेनमेंट, जैसे कि हम ओटीटीज पे मूवीज देख सकते हैं, सीरीज देख सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स है. ई कॉमर्स साइट, दैट इज ऑनलाइन बैंकिंग साइट, दैट इज आल्सो कम्स अंडर ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर. सम हेल्थ साइट्स और सम गवर्नमेंट साइट्स, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट साइट्स है, पॉलिसीज वगैरह फ्रेम हुई, हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली. सो दैट आल्सो प्रोवाइड्स that provides this government site, that also provides online service, as well as the main thing, that is social media. Social media, that also comes under the online service providers. For the entertainment purpose, definitely social media is being used. So that includes these safe harbor provisions is for online service providers as well as it is for internet service providers. अब internet service कौन provide करता है? That is the BSNL is there. For example, BSNL is there, Jio is there, Airtel is there, Vodafone, or suppose Tata Communication is there. These are some online service providers. So under this safe harbor provisions, it protects these online service providers as well as it protects these including internet service providers, as well as it protects some websites, and from what it protects from liability of copyright infringement which is committed by the users. Okay, so from this piracy, from the infringement, these online service providers, internet service providers, websites, they are being protected under this safe harbor provisions. So to qualify for the safe harbor provisions, for the protection of it, this online service provider, they must act expeditiously. Why? Just to remove or to disable the access to infringing material upon receiving some valid takedown notice. अब सपोज मैंने अगर ओरिजिनल कुछ वर्क कंटेंट क्रिएट किया है, ठीक है, और मैंने वो मेरा ओरिजिनल वर्क है, अगर सेम कंटेंट अगर कोई पर्सन, अनऑथोराइज्ड पर्सन, अगर मेरा कंटेंट एज इट इज यूज कर रहा है, कॉपी कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, तो इन दिस केस मैं क्या कर सकती हूँ? दिस ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो है, ठीक है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स मीन्स अगर एक आधी वेबसाइट है, वेबसाइट पे अगर मैंने कुछ कंटेंट मेरा अपलोड किया है, तो मैं ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर को और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, इनको मैं नोटिफाई कर सकती हूँ. सपोज मेरा कंटेंट यूट्यूब पे है और यूट्यूब पे मेरा इंफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो मैं ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर यूट्यूब को भी मैं नोटिफाई कर सकती हूँ रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ इंफ्रिंजमेंट. ओके, कब कर सकती हूँ? डेफिनेटली अगर मेरा कोई कंटेंट इन्फ्रिंज कर रहा है तो, ठीक है, तो यहाँ पे एक वैलिड टेक डाउन नोटिस सेंड किया जाता है, and then afterwards these online service providers, they can take an action to remove that content, infringing content regarding it. Next one, in this case, in case of online service provider, ये भी include किया गया है. DMCA का एक वेबसाइट है, that is dmca.com. तो ये dmca.com पे जाके, that is also another online service provider.
सपोज अगर मेरा जो ऑनलाइन कंटेंट है यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब को नोटिफाई कर सकती हूँ। और सपोज मैं यूट्यूब पे नोटिफाई अगर नहीं कर रही हूँ तो मेरे पास और एक ऑप्शन रहेगा, दैट इज आई कैन नोटिफाई टू द this DMCA portal, that is dmca.com. I can make a complaint over there, and then DMCA will take an action against such kind of infringement work. Then next one is take down notice and counter notice regarding it. Suppose any content creator of any form, either it is of literary, artistic, dramatic, cinematographic, of any form, then who believes that their original content that is has been copied by the users or that website without the authorization, then he can file an application citing that intellectual property which has been stolen or which has been violated or which has been infringed by any other person without authorization. Then this user, he can either approach directly to the website on which that content has been hosted. मीन सपोज अगर मैंने यूट्यूब पे और फिर इंस्टाग्राम पे और मेरी स्पेसिफिक वेब अगर कोई वेबसाइट है वहां पे डायरेक्टली मैं क्या कर सकती हूँ, अप्रोच कर सकती हूँ, वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ. और दैट ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर ही कैन make approach to the third party service providers. तो third party service providers में कौन आता है? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स में ये DMCA भी आता है, दैट इज dmca.com. ये जो पोर्टल है वो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स में आता है. थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या कि मेरा कंटेंट है, ठीक है, मेरा कंटेंट अगर यूट्यूब पे है और यूट्यूब पे इन्फ्रिंज हो रहा है तो मैं जो कि जिसका ओरिजिनल कंटेंट है और यूट्यूब डायरेक्टली यूट्यूब को मैं क्या कर सकती हूँ, वहां पे कंप्लेंट कर सकती हूँ. DMCA एक क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो ये थर्ड पार्टी भी यहाँ पे क्या कर सकती है, सर्विस प्रोवाइड कर सकती है. इट मीन्स विच यूटिलाइज द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू हेल्प दैट टेक डाउन ऑफ स्टोलन कंटेंट फॉर अ स्मॉल फी. DMCA क्या करता है, उनको नोटिस, जो जिन्होंने भी इन्फ्रिंजमेंट किया है उनको नोटिस सेंड करता है एंड उनको ये नोटिफाई किया जाता है दैट इज to take down that infringement work from your website, either take down it or either remove it from your website. So original content creator, first of all, he has to give some proof regarding that original work that is his own, and then they will delete it. अगर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर को क्या करना पड़ता है, अगर वहां पे उन्होंने कंप्लेंट भी फाइल की है तो उस कंप्लेंट के साथ उधर प्रूफ भी सबमिट करना पड़ता है कि वो मेरा ही ओरिजिनल कंटेंट है. एंड देन आफ्टरवर्ड्स दैट DMCA ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स और that particular website, they can take an action and they will delete that data, infringed data from the website. So in that case of social media intermediaries, like there is Yabby, Insta, and Twitter is there, right? So that content creator, they can directly approach to the platform of Insta, Yabby, and Twitter for infringement of work with the proof of them that they are being original content creator. And these companies, they are operating in the nations which are signatories to the WIPO. So it is near about in 200 countries. This why? Because हम अगर यबी पे अपना अकाउंट ओपन करते हैं, हम वहां पे देख सकते हैं कि अदर कंट्रीज के भी मेंबर्स हैं यहाँ वहां पे, राइट, इंस्टा पे, यबी पे, ट्विटर पे. व्हाई? बिकॉज इट इज ग्लोबली कनेक्टेड by the WIPO, and that is the reason they are obliged to remove that said content if they receive a valid and legal DMCA takedown notice. Then अगर वो किसी भी कंट्री का रहे, that doesn't matter. किसी ने भी अगर without permission infringe original work, okay, again and again I am highlighting that there must be a original work. So that original work must be
created by that copyright holder, and if it is infringed by any third person, तो DMCA और ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, उनको टेक डाउन नोटिस देता है. टेक डाउन मतलब कि आप अपना जो कंटेंट है, ये इन्फ्रिंज कंटेंट, वो वहां से हटाओ, वहां से निकालो और रिमूव करो. So again, another term is that counter notice. So that users who believes that, suppose अगर कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर के अगेंस्ट में ही किसी ने कंप्लेंट फाइल किया DMCA को, तो that users who believes that their content that was wrongly removed, he can file a counter notice to it, and he also has to give a proof regarding it to that online service providers or to that directly and promoting that the restoration of that content, unless कि मेरा जो भी कंटेंट रिमूव किया है, ये कंटेंट रॉन्गली रिमूव किया है और मुझे मेरा जो कंटेंट है वापस रिस्टोर चाहिए. ठीक है. एंड देन unless if that content is not being restored, even though he is the he's the only original content creator, then definitely the copyright holders, he can initiate some legal actions against it. Last one is of fair use. This fair use doctrine that permits limited use of copyrighted works without obtaining permission from the copyright owner. So for using the copyrighted work, if any person uses it, means for fair use करना है अगर किसी को, then definitely he can do so without, for the fair use that permits limited use of copyright works, that without obtaining permission from the copyright owner. कि मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मुझे फेयर यूज करना है तो फेयर यूज के लिए मुझे जिसका भी ओरिजिनल कंटेंट है, कॉपीराइट होल्डर जो है, उनके परमिशन की इधर रिक्वायरमेंट नहीं है. तो इसके एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं? सपोज फॉर द पर्पज ऑफ क्रिटिसिज्म यू आर यूजिंग दैट कंटेंट, for the purpose of comment you are using that content, or suppose for news reporting, for the purpose of education, for the purpose of teaching, or for the purpose of research, as well as for the purpose of some government use. If any person using that copyrighted work for the fair reason, then definitely that is also an exception. But it is very important that whether that use is fair or not, that can only be decided, evaluated after the facts heard by the judges. So नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने पर्सनल यूज के लिए, कमर्शियल गेन के लिए कंटेंट क्रिएट इन्फ्रिंज कर सकता है, एंड देन अगर कोई ऐसा डिफेंस ले रहा है कि नहीं मैंने फेयर यूज के लिए ये कंटेंट लिया था, नो. सो ये फेयर यूज हो रहा है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? जज विल डिसाइड इट. सो रिगार्डिंग दिस DMCA नोटिस, whose mic is turned on, please mute your mic. So there are some cases, incidents where the DMCA notice is been sent. So under these key components of DMCA, जो हमने अभी ये 4 की components देखे हैं DMCA के, तो DMCA क्या कर सकता है? DMCA that can send a notice to any person who infringed the original work or who infringed the privacy of any person. Now definitely इससे related कुछ इंडियन सिनेरियो, इंडियन केसेस है, इंसिडेंट्स है, जिसके बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे. That is cases which are related to DMCA. First case, the DMCA notice that is sent to the Shashi Tharoor. Shashi Tharoor, who is the minister, who is politician, as well as who is an author. So DMCA complaint was filed against Shashi Tharoor. This Shashi Tharoor, he faced a temporary lockout. Okay, temporary lockout from the Twitter in 2022. Why? Just because DMCA filed a complaint against him.
That DMCA complaint filed against that Tharoor tweeted account which alleging copyright infringement. That complaint targeted specific tweets which are containing some images or and some videos from the news channels and from the other sources. तो शशि थरूर ने क्या किया था, कुछ इमेजेस, कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ न्यूज चैनल के क्लिप्स, ये सब यूज किया था, ठीक है, विदाउट द ऑथराइजेशन उन्होंने यूज किया एंड उनके ट्विटर अकाउंट पे उन्होंने पोस्ट किया। इमीडिएटली उनको डीएमसीए के पास किसी ने उन जो भी ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटेड है, they file a complaint to this DMCA and DMCA send a notice to Shashi Tharoor and immediately they lock out the account of Shashi Tharoor. That Twitter temporarily locked that Tharoor's account, restricting that access until the alleged infringing content was removed. जब तक वो कंटेंट रिमूव नहीं किया जाता तब तक उनका क्या किया गया, वो जो ट्विटर का अकाउंट है वो लॉकआउट किया गया, ठीक है। थरूर ने क्या बोला, दैट शशि थरूर ही रिस्पॉन्ड दैट इट इज criticized Twitter's action and stating that it was done without the prior notice and without the prior explanation of him, and that whatever news clips which is shared by him, that falls under the fair use. That he take a defense कि मैंने क्या किया है, fair use किया है, fair use purpose के लिए मैंने वो use किए थे, and but without listening to him, that after he removed that infringement content from his account, then afterwards Twitter stored his account. जब तक उन्होंने वो जो भी infringing content है वहां से रिमूव नहीं किया तब तक ट्विटर ने उनका अकाउंट रिस्टोर नहीं किया। It means what it highlighting, that it highlighting the original content will be protected by the DMCA throughout the all signatories countries. So Twitter lastly clarified that lockout was due to the DMCA complaint and not for the violation of Twitter's rule. तो इसमें ट्विटर के कोई भी रूल वायलेट नहीं हुए, जस्ट बिकॉज डीएमसीए के पास कंप्लेंट गई एंड डीएमसीए ने एक्शन क्या ली कि टेम्पररीली जब तक वो अपना डेटा जो भी इन्फ्रिंज्ड डेटा है वो रिमूव नहीं करते तब तक उन्होंने वो लॉकआउट किया अकाउंट। Another incident, that is DMCA notice which is given to Shankar Prasad. Again, he is a politician, IT Minister of India. This Sony Music Entertainment, everyone must know about it, right? So Sony Music Entertainment by International Federation, they make a complaint against this Ravi Shankar Prasad. Why? किसको अगर जो फर्स्ट इंसिडेंट था, ठीक है, शशि थरूर का, उसमें किसके पास कंप्लेंट की, डीएमसीए के पास, दैट इज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, थर्ड पार्टी पर्सन। बट यहाँ पे इन दिस केस नोटिस किसको सेंड की गई, डायरेक्टली टू द ट्विटर, मीन्स कंप्लेंट वाज फाइल्ड डायरेक्टली टू द ट्विटर एंड हियर alleging that copyright violation of the phonographic industry. In this case, Shankar Prasad, he used Sony Music song which is sung by A.R. Rahman. A.R. Rahman ने एक गाना गाया था, that is माँ तुझे सलाम, ठीक है, and that song is having copyright protection, and this Shankar Prasad, he used that song, he tweeted that song, and hence his Twitter account that was locked out. Why? Because it is a ओरिजिनल वर्क, इट इज कॉपीराइट होल्डर कौन है इसका, दैट इज सोनी म्यूजिक। सोनिक म्यूजिक के पास उसके कॉपीराइट थे, तो सोनी म्यूजिक ने क्या किया है कि हमारी तो परमिशन ली नहीं शंकर प्रसाद ने, इनडायरेक्टली उन्होंने वो वीडियो वगैरह अपलोड किया ट्विटर पे, तो यहाँ पे उनके अगेंस्ट में ये सोनी म्यूजिक ने कंप्लेंट फाइल की ट्विटर के पास, एंड हेंस दैट हिज ट्विटर अकाउंट that was locked out from some period of time,
कि जब तक उन्होंने उनका जो भी ये जो पोस्ट किया है गाना, वो जब तक रिमूव नहीं होता तब तक उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया. एंड व्हेन ही रिमूव दैट कंटेंट, देन आफ्टरवर्ड्स हिज अकाउंट दैट गेट रिस्टोर. तो ये पूरे एक ओवरव्यू है रिगार्डिंग DMCA. In short, I would like to explain some Indian scenario regarding it, as India is also a member of the WIPO, right? So which has its own treaty as well. It means that allies with the DMCA. India, which is being a different jurisdiction, that does not directly apply the DMCA, but it has its own set of laws that address similar issues, which are covered under the DMCA. And now some issues which are tried covered under new resolutions, Indian new resolutions, that India has enacted several laws and amendments to protect this digital copyright content. First of which, that is IT Act of 2000, which addresses digital copyright infringement, which also talks about, which provides safe harbor provisions for intermediaries. जैसे कि अभी हमने देखा अंडर द DMCA कि कुछ सेफ हार्बर प्रोविजंस भी है, लाइक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स आर देयर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर देयर. तो IT एक्ट के अंडर ये जो भी हार्बर प्रोविजंस है, ठीक है, दैट इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये भी कवर्ड है. दैट आल्सो इट इनेबल्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ कॉपीराइट कंप्लेंट्स. अगर किसी को कॉपीराइट कंप्लेंट फाइल करना है, यस डेफिनेटली दे आर इनेबल अंडर IT एक्ट टू फाइल इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट्स. Another legislation, that is Copyright Amendment Act 2012, which introduces some provisions for digital rights management. जैसे हमने प्रीवियसली अभी DMCA के कुछ प्रोविजंस के अंडर देखा, दैट DRM is there. Also it protects the broadcast protection rights, also which talks about copyright infringement penalties, as well as there is another recent copyright amendment bill is introduced in 2022, which proposes some updates to जो भी previous act है हमारा copyright act 1957, तो उसमें ही क्या किया है कि कुछ अपडेट किया है, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI जनरेटेड वर्क्स. जो वर्क सपोज मैं जनरेट कर रही हूँ कुछ ओरिजिनल वर्क, तो AI के अंडर की जो AI ने जनरेट किए जो वर्क है, तो इससे रिलेटेड भी कुछ प्रोविजंस ये कॉपीराइट अमेंडमेंट बिल 2022 के अंडर इंट्रोड्यूस किए गए. देन आफ्टरवर्ड्स एक्सटेंडेड सम कलेक्टिव लाइसेंसिंग. कलेक्टिव लाइसेंसिंग के बारे में भी इस बिल में कुछ प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं. तो which the Indian laws, these are 3 Indian laws which specifically talks about digital copyright content which is protected under these laws. Lastly, I would like to explain one of the case law. There are actually various case laws are there regarding it. So certain these Indian case laws and certain these legislative frameworks which indirectly align with this principle which are found in the DMCA. So here are some notable Indian legal cases which are related to copyright protection as well as to the digital content, which bear some similar issues which are covered under the DMCA as well. Okay, so there is one case law that is, actually I would like to keep this one. First, there is RK Production Private Limited versus Bharat Sanchar Nigam Limited. In this case law, application was made that is for the permanent injunction. Application seeking a permanent injunction for what? For stopping pre-download of pirated movies, which is filed under section 2M, under section
14 clause D under section 15 and 55 of the Copyright Act of 1957, as well as under section 79 and 81 of the IT Act of 2000. So issue in this case was when arises that the issue arises the procedure of Tamil film. Excuse me. The producer of Tamil film 3, which also featuring this famous song, everyone must know, right? This song, everyone has an idea regarding this song. That why this कोलावरिडी, who बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था ये सॉन्ग, राइट? तो ये जब सॉन्ग आउट हुआ, मार्केट में आया, तो बहुत सारे वेबसाइट्स पे वगैरह ये सॉन्ग ये किया, डाउनलोड वगैरह किया जा रहा था, ठीक है? सो दिस प्रोड्यूसर of the film, he filed a case against the various internet service providers, including BSNL also. Why? Just for they allowed the piracy of their film through the illegal website. जो कि इनका सॉन्ग था, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट थे, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स थे. ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स में बहुत सारे वेबसाइट इंक्लूड होते, राइट? कि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स पे इनका जो सॉन्ग था वो कहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट और कहाँ पे विथ पर्टिकुलर अमाउंट, स्मॉल अमाउंट क्या हो रहे थे, पायरेसी हो रही थी बहुत ज्यादा इनकी. क्यों? क्योंकि तब ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, हिट हुआ था, तो डिमांड भी बहुत ज्यादा थी. तो ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स ने, ये जो इलीगल वेबसाइट्स थ्रू जिन्होंने भी ये सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो उन सभी के अगेंस्ट में इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने क्या किया, सूट फाइल किया फॉर द परमानेंट इंजंक्शन. So here in this case, Madras High Court, they granted an injunction, and which is also directing internet service providers to block such websites which are hosting such kind of pirated copies of the movies. ऐसे होते हैं ना बहुत सारे ऐसे, अभी भी बहुत जन को ये भी पता होगा कि कौन से ऐप है जहाँ पे पायरेटेड मूवीज हमें मिलते हैं, ठीक है? कुछ बहुत बार ऐसा भी होता है कि मूवी अभी भी थिएटर में है एंड स्टिल वी कैन वॉच इट ऑन अवर मोबाइल थ्रू सच काइंड ऑफ इलीगल एप्स, इलीगल वेबसाइट्स. तो इसके अगेंस्ट अगर किसी ने, कुछ ऐसे ऐप है कि ऐसे ऐप के अगेंस्ट अगर किसी ने जो ऑनलाइन जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है, इन्होंने अगर कंप्लेंट फाइल किया तो डेफिनेटली ऐसे इलीगल वेबसाइट बैन किए जाते हैं. इनके अगेंस्ट परमानेंट इंजेक्शन भी हम फाइल कर सकते हैं. सो इन दिस केस that Madras High Court directing intellectual service providers to block that website that hosted these pirated copies of the movie. Also, it reflects that concern about digital content protection, the concern about copyright infringement through this unauthorized distribution of work, and similar to DMCA's anti-circumvention provision. So here, I would like to conclude my lecture with this, after discussing this Indian scenario over the digital content. I would like to sum up by my point of view over it, that as this DMCA, that is maintaining balance between the rights of copyright owners and between the need of the consumer by examining their copyright, each other's copyright violation. So while India, who does not have exact equivalent to that of DMCA, but the Indian copyright law, then afterwards IT Act, as well as some case laws that reflects a parallel evolution of copyright protection in this digital environment in India. Often, definitely it is inspired by some international framework like DMCA. India is also having some laws regarding protection of this digital work.
So thank you so much. Hello. Thank you very much, Yes. ma'am. Yeah, I would like to ask if suppose there is any discussion or any point of view to be asked, any questions to be asked from the students. I would like to request if anybody has to raise their hands or point, keep their point, ask a question. You can raise your hands. काही प्रश्न असेल, काही डिस्कशन असेल तर आपण डिस्कस करू शकतो. Many of the first year students are there who are having this particular subject. Yes, I think, ma'am, much more thought process is going on with the students. And you have really delivered a very good comparative study of the US law also, as well as the Indian law. And along with the some very important case laws, the real incidents also you have given. You also put forth your opinion based on what are the needs in the Indian law also, and so that the online content and the intellectual property rights can be protected even in this particular digital age. Thank you for such an elaborate and detailed discussion on the particular topic. I would like to ask Principal Ma'am that we can, if there is no further discussion, anyone? Yeah, you can unmute the mic and yes, I'm not able to verify the name of the person. Yes, you can put forth any question if any question is there. Okay, I think no, but I would like to thank here Advocate Shri Vajpayee sir. I would like to thank Principal Dr. Poonam Nathani madam, all the teaching faculty members, and all my dear students for attending here. I would extend my special thanks to today's resource person, Ms. Unnati Jadhav madam, and she has presented very well with the very nice PPTs. So thank you, ma'am. And this discussion will of course go on in the class also now. Thank you for your very elaborate lecture. Thank you. Thank you so much, madam. Thank you for this opportunity. I would like to thank Advocate Ashiji Bajpayee sir. Also, I would like to thank our beloved Principal Nathani madam and coordinator of this lecture series program, that is Shubhangi Panchai madam, and my beloved students who are taking much interest in this lecture series. So thank you so much, everyone. And also, I would like to thank Kokne sir Yeah, for technical support. for technical support. So here I would like to conclude. Yes, thank you, ma'am. With the permission, I'll be ending up the meeting today. Thank you.